Good morning, students. Now we are going to do further the topics of this chapter. Okay. Now the another important aspect in this chapter is what is an human activity. Okay. Human activity is all those works, all those work or jobs performed by a human being to satisfy his demands. Okay, his demands is termed as human activity. Okay, so when a human being is performing various activities to satisfy his demands, those activities are coming under the definition of human activity. And since these demands are expanding day by day, expanding day by day due to scientific revolution, okay, due to these human activities are expanding or demands are expanding day by day due to scientific revolution. Hence, human beings are required to perform various activities which they have categorized as economic activity, second one is the non-economic activity. ओके, तो ह्यूमन बीइंग की क्योंकि डिमांड्स बहुत ज़्यादा हो गई तो उनको सेटिस्फाई करने के लिए उसको वो सारे काम करने पड़ रहे हैं. ओके, ड्यू टू साइंटिफिक रेवोल्यूशन वो डिमांड्स बढ़ती जा रही हैं. तो अब उसने क्या किया, उन एक्टिविटीज़ को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. ओके, वन इज द इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड अनदर इज द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. अब इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? ओके, those activities which are performed to satisfy demand for a consideration measured in terms of money. मतलब जिन एक्टिविटीज को आप मनी टर्म्स में, क्वांटिटेटिव टर्म्स में मेजर कर सकते हो, जैसे कोई डॉक्टर आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है, मतलब आपका ट्रीटमेंट करता है, उसके बदले में वो आपसे फीस लेता है. तो वो जो फीस है वो कंसिडरेशन है उसकी. ओके, फॉर द एक्टिविटी ही हैज परफॉर्म एंड ही हैज हेल्प यू टू he is satisfying the demand of whose? He is satisfying the demand of customer. Okay, एक कस्टमर को स्टमक पेन था, तो अब वो स्टमक पेन से रिलीफ चाहता है, वो डॉक्टर के पास गया. डॉक्टर ने जो एक्टिविटी की फॉर ए कंसिडरेशन ऑफ मनी टू सॉर्ट आउट दैट प्रॉब्लम,
वो जो एक्टिविटी होगी, क्योंकि वो मनी टर्म्स में आपने फीस पे करके वो सर्विसेज ली हैं, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में कंसिडर की जाएंगी। ओके, सो अनदर इज you can have a chartered accountant gives the services, a teacher is giving the private services, okay, a school is giving the services, okay, for on charging certain fees, tuition fees, admission fees, then bus fees. So all those services which are being provided by various human beings in return of certain consideration, okay, to satisfy the demand of the individual concerned, is coming under the definition of economic activities. Okay, and non-economic activities are those activities which though help in satisfying demand, but there is no exchange of money. मनी ट्रांजैक्शन का कुछ नहीं है इसमें लेना देना। ओके, फॉर एग्जाम्पल द फूड कुक्ड बाय मदर, ओके, food cooked at home by mother, okay, so you don't pay money for that, but it helps you in satisfying your demand, your hunger, okay, is being fulfilled, but mother is not charging you any money, okay, so that will not be considered as the economic activity, but it will be considered as the non-economic activity. Okay, so that is the another important thing. Fine, so the main objective of economic activity is satisfaction, whereas non-economic activity, the main job of non-economic activity is what? Satisfaction. Okay, satisfying. Satisfaction is the main job, whereas in case of your economic activity, the main purpose is earning money. Okay, this is done for, and the main objective is earning money. This is the main objective. Okay, fine. That is the main objective of economic activity. Another important thing is, this is the expectation in economic activity is to earn profits. Okay, and other non-economic, it is mental satisfaction. Okay, and the economic activities are performed regularly. These are performed regularly. Okay, these activities are performed regularly. Okay, but in this, it's not necessary. It can be skipped someday. Okay, so non-economic activities does not mean that they need to be done every day. Okay, they can be skipped someday, but in case of economic activities, they need to be done on a regular basis. That is the another important aspect. Okay, now moving over from the economic activities, non-economic activities, the another important aspect is that we are now focusing our attention on economic activities. So economic activities
focus is now on business activities. So business is all those activities, all those economic activities which are involved in production, distribution, etc. are coming under the context of business. Okay. Otherwise, we are saying to keep somebody busy in business, but business is actually all those economic activities which are involved in production and distribution activities. Okay. For example, we have a factory. Okay. Factory is involved in purchase of raw material, okay, and is converting it into finished product for further consumption. Okay, for further consumption after, ठीक है, and supplies it either to consumer or to some other firm in lieu of certain amount as consideration. ओके, तो यहाँ क्या हुआ कि एक फैक्ट्री है, वो रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर रही है फिनिश प्रोडक्ट में, जिसको फर्दर कंज्यूम किया जाएगा। किससे? चाहे तो वो डायरेक्टली कंज्यूमर को सप्लाई कर रही है, फॉर एग्जाम्पल रॉ मटेरियल था वीट, ओके, रॉ मटेरियल वॉज वीट, ओके, एंड कंज्यूमर इज गेटिंग flour for consumption, okay, or to some other firm, okay. So this firm is also getting bulk of flour, okay, and they are paying certain amount, okay, as consideration. So this factory is supplying product to two parties. Factory is supplying product to two parties, okay. One is consumer, another is trading firm, okay, and
to various parties, or it can be another can be production unit. Okay, so consumer is getting retail of floor, retail quantity. Okay, trading firm is getting product in bulk quantity and further supplying in retail to consumer, and production unit is using the product received from supplier firm to produce new type of product. ठीक है, तो अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि बिजनेस क्या है, कि हम वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं जहाँ पे प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। फर्म यहाँ पे क्या कर रही है, डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, यहाँ क्या कर रही है, डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, यहाँ क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन, और यहाँ क्या हो रहा है, प्रोडक्शन। ओके, तो एक फर्म, ये फैक्ट्री ने पहले क्या किया था, प्रोडक्शन। ओके, और पीछे से इसको क्या आया था, रॉ मटेरियल फ्रॉम गवर्नमेंट। ओके, तो गवर्नमेंट से उसने वीट प्रोक्योर की, और वो वीट प्रोक्योर करके उसने उसको कन्वर्ट कर दिया फ्लोर में, फिर उसने कंज्यूमर को सप्लाई कर दिया, या उसने ट्रेडिंग फर्म को सप्लाई कर दिया, ट्रेडिंग फर्म ने आगे कंज्यूमर को सप्लाई कर दिया। ओके, और इसने एक और प्रोडक्शन यूनिट को दे दिया जिसने उस वीट उस फ्लोर को बंस में, ब्रेड्स में, बंस में, ओके, ब्रेड्स में, ओके, नूडल्स में कन्वर्ट कर दिया। तो मतलब ये सारे क्या हैं, और इनसे क्या, इससे भी पैसे ले रहे हैं, इससे भी पैसा ले रहे हैं, मतलब फॉर अ कंसिडरेशन, ही इज नॉट गिविंग देम फ्री ऑफ कॉस्ट, ही इज गिविंग देम फॉर अ कंसिडरेशन। So is charging him the money, he is charging him the money, it's charging him the money, he is charging him the money, and then this product will be sold in the market, okay, to consumer, to traders, and they will further supply it. So all those who are involved into production and distribution of the goods and services for a consideration in terms of money are coming under the definition of your business. Okay, और business ये सारा कुछ क्यों करता है, okay, why all these activities, why business is doing production, procurement, distribution, okay, etc. Just एक purpose के लिए, okay, why this, the main purpose of doing all economic activities by a business is to earn maximum profit। कोई जन कल्याण के लिए कोई काम नहीं है,
ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए है, तो उसके लिए इतना सारा काम किया जाता है, इतनी सारी मेहनत और एफर्ट्स किए जाते हैं. So all these economic activities which are being carried on by a business, i.e. production, distribution, procurement, storage, whatever they are doing, okay, they are doing for the purpose of earning profits, maximum profit. And what they are doing is they are purchasing the raw material, converting it into finished product, which is being further sent for consumption, and supplies it to the either to the consumer, okay, or to the other firms in lieu of certain amount as consideration. money कमाने के लिए, पैसा लगा के पैसा कमाने के लिए जो एक्टिविटीज की जा रही हैं वो बिजनेस में आ रही हैं, और इतना एफर्ट इसलिए किया जा रहा है सो दैट द बिजनेस कैन अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट. ओके, जो भी इनकम है वो अर्न करने के लिए, इनकम में से अगर टैक्स निकाल दोगे तो वो क्या बन जाएगा, आपका प्रॉफिट बन जाएगा. सो ऑल दीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर डन to get the profits. Okay, so that is what the business is. Okay, now moving over to the features of the business. Fine. So this is why business, what business is all about. Now let's discuss the features from this definition and other things which we have discussed in this context. Okay, so what are the features of a business? कि कौन कौन से एलिमेंट्स किसी एक्टिविटी को बिजनेस क्वालिफाई करेगा. ओके, सो फीचर्स. ओके, फर्स्ट थिंग इज इट इज एन economic activity. Okay, so it is an economic activity. So all those activities which are being carried on in a business are basically in consideration of money. Okay, economic activity means all activities are performed to satisfy demand, okay, by exchange of money. Okay, अगर ये मनी नहीं है तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है. ओके, अगर ये मनी नहीं है तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है. एंड इफ द मनी इज नॉट इन्वॉल्व, that all that means it is not a activity which qualifies as business. So every economic activity which involves satisfaction of demand in lieu of certain consideration, and that consideration should be measured in terms of money, only then it qualifies as the economic activity of business. Okay, so love, affection, respect, care, all these are not part of business. Okay, ये economic activities नहीं है क्योंकि आप इसे monetary terms में measure नहीं कर सकते हो. Okay, another important is that it involves production or procurement of goods. Production or procurement of goods and services. Okay, तो दूसरा हमने क्या कहा था डेफिनेशन में कि it is involved in the manufacturing of the goods or distribution of the goods. तो हमने या तो हमारा काम क्या है बिजनेस में, हम क्या करते हैं, या तो हम प्रोडक्शन करते हैं. ओके, तो आप कन्वर्ट करते हो किसको, रॉ मटेरियल को. रॉ मटेरियल इज
converted into semi-finished or finished product for further consumption. Okay, and what is procurement? We are arranging this raw material which is further used in, or procurement is we are arranging finished goods from production unit and distributing amongst various trading firms so as it can be sold to maximum number of consumers. So procurement का मतलब क्या है? Distribution. Procurement is collecting goods or finished product for further distribution. Okay, तो प्रोक्योर कर रहे हो आप, या तो रॉ मटेरियल प्रोक्योर कर रहे हो प्रोडक्शन यूनिट के लिए, या आपके प्रोडक्शन यूनिट ने जो कुछ प्रोड्यूस किया है उसको आप प्रोक्योर कर रहे हो और फर्दर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो वेरियस ट्रेडिंग फर्म्स के पास, so that the product can reach maximum number of consumers and help them in satisfying their demand by paying a certain sum of money. That is, so the production or procurement of goods, basically we have discussed is that the raw material is converted. So in this we can further substitute, further classify as one is capital goods. Okay, capital goods means long term assets are being produced. Okay, and other one is services. Okay, services are like BPO services, okay, or your insurance services, okay, or transportation services, or banking services. So all these are coming under the definition of business. Okay, so business includes production or procurement of goods and services. Either business is involved in production of trucks, that is capital goods are being produced, long term assets which are being produced, and these long term assets are being then further used for providing services to the consumers, okay, in the form of transportation services. Insurance companies are involved in providing service to the truck owners to insure their truck. So that is coming under the definition of your business, that is production. Another important thing is that there should be sale or exchange of goods and services. Okay. Third important thing is sales or exchange of goods oblique services. Okay. So if you have produced pakoras today, okay, because it's a very
good environment, the weather is so good, enjoyable, you can have pakoras at present. Okay, but if those pakoras are not being sold in the market to earn money out of that, that will not be considered as an economic activity, hence will not qualify for the term business. So term business involves production of goods and then exchange or sale of those goods and services. Whatever you are producing for yourself and consuming on your own, but you are not selling those goods or services in the market to earn a sufficient amount of money out of those goods which are being produced or services which are being produced, then that will not qualify as your business activity or economic activity which can be the part of business. Okay, so it is very important, whatever the goods which are being produced or the services which are being produced, they need to be exchanged or they need to be sold in the market for a consideration in terms of money, and then only they will qualify as business activity, otherwise they will not qualify as business activity. Okay, then another important thing is that these goods or services should be exchanged on regular basis. Okay, so that is another important aspect. If the goods and services are being produced once and exchanged once, they will not qualify as business activity. For example, you have purchased a second-hand book, or you have purchased a book, okay, and sold to somebody else. So that is not part of business. Business involves regular production of goods and services and exchange on a regular basis also. कि आपकी प्रोडक्शन एक्टिविटी रेगुलर चल रही है, ये नहीं कभी ऑफ एंड ऑन आपने मतलब आपके पास आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी थी और उसे 10 साल के बाद बेच दी, तो वो बिजनेस नहीं है। बिजनेस कैसे होगा प्रॉपर्टी का कि आप रेगुलरली लैंड एंड होम परचेज कर रहे हो, फ्लैट्स परचेज कर रहे हो, रेगुलर सेल कर रहे हो, तो ये जो रेगुलरिटी ऑफ एक्टिविटीज़ है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, ये भी एक कंपल्सरी एस्पेक्ट है। अगर ये रेगुलरिटी नहीं मेंटेन कर पाते हो तो वो ये बिजनेस के लिए क्वालिफाई नहीं करेगा। सो दैट इज द अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर। ओके, देन अनदर थिंग इज that business is done to earn profit. Okay, in this all the economic activities are done with a motive to earn profit. So profit is the major reason why we are doing these economic activities. और अगर पैसा ही नहीं, प्रॉफिट ही नहीं कमाना है, लॉस ही सफर करते जाना है सिर्फ, तो क्या मतलब है बिजनेस करने का? फिर बंद कर दो उसे। तो बिजनेस जो हम कर रहे हैं उसका मेन मोटिव तो क्या है? उसका मेन मोटिव है प्रॉफिट कमाना। आप लॉस सफर कर जाओ, दैट इज टोटली डिफरेंट थिंग, बट मेन aim to earn is profit. So whatever the economic activities, whatever the transactions which are happening in a business, production or procurement of goods and services which are done on regular basis, okay, all these economic activities are done with a motive to earn profit. Profit is the compulsory aspect of a business. And another important thing is कि अभी हमने डिस्कस किया था कि इसमें आप लॉस सफर कर सकते हो। ओके, तो हमने क्या डिस्कस किया था? दैट यू कैन सफर लॉस इन दिस आल्सो, सो दैट सफरिंग ऑफ लॉस
यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल पॉइंट है कि अनसर्टेनिटी है। अगर आपको पक्का पता है कि मैं प्रॉफिट ही कमाऊंगा, फिर वो बिजनेस नहीं है, वो या तो प्रोफेशन है या वो एम्प्लॉयमेंट है। क्योंकि एम्प्लॉयमेंट में पता है कि पक्का सैलरी मिलेगी, प्रोफेशन में पता है कि फीस मिलेगी। ओके, तो जब जिस बिजनेस में ये कंफर्म हो जाए, श्योर हो जाए कि हर बारी जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करूंगा उसमें प्रॉफिट ही कमाऊंगा और इतने % प्रॉफिट कमाऊंगा, वो बिजनेस के लिए क्वालिफाई नहीं करता है। आपके यहाँ पे एक अनसर्टेनिटी का एलिमेंट होना चाहिए, जैसे आजकल है। दीज डेज यू आर सफरिंग ए पेंडेमिक एंड होल इकोनॉमिक एक्टिविटी हैज गॉन टू जीरो। ओके, Maruti has first time in its life has sold 0 vehicle. That is uncertainty of business activities. हर साल प्रॉफिट कमाने वाली रिलायंस 10,000 करोड़ 9,000 करोड़, this time it has earned 6,800 crores and it has become second profit earning company as compared to Tata TCS, which has earned 8,200 crore rupees. So Tata has become number 1 company in this pandemic scenario, whereas Reliance has become second most profitable company in this country. Okay, so ये क्या है? Uncertainty. ये कोई श्योरिटी नहीं है। ऑयल के प्राइसेस -$37 तक चले गए, किसने सोचा था? ओके, सो दैट इज अनसर्टेनिटी। ओके, सारे के सारे जितने भी कंट्रीज हैं वहाँ ऑयल आपका क्या है, 95% to 100% स्टॉक अप हुआ पड़ा है, कोई प्रोडक्शन एक्टिविटीज नहीं हो रही हैं। तो बिजनेस में जब तक अनसर्टेनिटी नहीं होगी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, तो वो जो एक्टिविटी है वो बिजनेस के लिए क्वालिफाई नहीं करेगी। ओके, देन देयर इज एलिमेंट ऑफ रिस्क इज देयर। There should always be an element of risk. Okay, element of risk, risk of suffering huge losses. Okay, that is an element. So क्योंकि यहाँ पे कस्टमर के टेस्ट, फैशन, सर्कमस्टांसेस चेंज होते रहते हैं। ओके, अभी हम पेंडेमिक फेस कर रहे हैं, हो सकता है जैसे ये पेंडेमिक चेंज हो उसके बाद इकोनॉमिक एक्टिविटीज बहुत तेजी से चलें, तो उस समय क्या सिनेरियो होगा? वैक्सीन कौन सा कंट्री निकालता है, कौन कमाएगा सबसे ज़्यादा पैसा? ये एक एलिमेंट ऑफ रिस्क है आपके लिए। कितने सारे लोग इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं इस समय वैक्सीन में, बट the person, the country, the company which is going to find out that vaccine at the very first stage, they will earn huge amount of profits. Okay, like China would not have expected that whatever PPEs or masks they are producing will be rejected by various countries, and that product will go back into their countries and many companies will suffer huge amount of losses. Or whatever rapid test kits which were being produced are being sent back, no money has been paid for those. That is an element of risk. तो जो टेस्ट हैं, प्रेफरेंसेस हैं, आज की डेट में हमारी प्रेफरेंस क्या होगी कि एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज, और दूसरी प्रेफरेंस क्या होनी शुरू हो जाएगी कि ऑनलाइन एजुकेशन है, ऑनलाइन वर्क हो रहा है, तो सबको ज़रूरत है इस समय मोबाइल फ़ोन्स की, इंटरनेट की, वाईफाई की, या फिर लोगों को टैबलेट्स की, लैपटॉप्स की, माइक्रोफोन्स की। सो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, वर्केबल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैव सडनली taken up the stage in the forefront and they are more in demand. तो जो कंपनीज इन चीज़ों को बना रही थी, कोई रेफ्रिजरेटर से कंसर्न नहीं है क्योंकि टेम्परेचर तो इंक्रीज हो ही नहीं रहा। ओके, कोई एसी से मतलब नहीं है, कोई कूलर से मतलब नहीं है। अभी किस चीज़ से मतलब है कि इंटरनेट बेस्ड एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो हमारे पास वो सारे गैजेट्स हों अवेलेबल जिससे हम ऑनलाइन एजुकेशन, कोचिंग, ट्यूटरिंग, सब चीज़ों के ऊपर फोकस हो रहा है। सो दैट इज़ व्हाट द एलिमेंट ऑफ रिस्क इज देयर। तो चेंज इन प्रेफरेंसेस, ओके, change in production methodologies, competition, fire, theft, all these are the element of risk which are involved
in these economic activities, and then they qualify for the business. Thanks.